Hey, you, welcome back. It's Jyoti. What's happening? Kya chal raha hai? Yashraj has dropped and Akash Ravan's on the music. What? Of course, I have to cover it. So, what did I cover from Yashraj last? I think like one of my favorite projects last year was 3P, and he's been working a lot. Top Floor Shit. Okay, that's him and Calm with Never Sober. So that was my last reaction. And usse pehle tha Pissed Off ka music video, which I reacted to with Bhola. And then it was, so March mein 3P dropped last year. August mein the Pissed Off music video dropped. Sanatan to I'd already covered early in the year. So overall, Yashraj had a good year, and then Top Floor Shit was just banger, banger. So he had a good year. He didn't have volume, but he definitely had quality. And we like that, quality over quantity. And now Akash Ravan and him are finally back as the artist-producer duo. So theek hai, let's see what this says. The 5th installment of an ongoing series of singles called VN Series Voice Notes, titled VN5 Pyas, signifies a thirst for excellence. Oh, both of them had it. Symbolizing an unshakable thirst for excellence, inner growth, driven by fearlessness and self-belief, the track speaks about facing real-life circumstances eye to eye, instead of just putting your head down and working. Even after enduring personal losses, wearing these experiences like an armor and surrendering to the bigger goal at hand, the canvas of an old school boom bap production by Akash Ravan lets the energy and intent shine, setting the tone for a year rooted in security and clarity. Each voice note reflects Yashraj's favorite producer collaborations. Why have I not seen the VN series Cup 1, 2, 3, 4 parts? I have not seen them. Each VN reflects Yashraj's favorite producer collabs, capturing moments from his evolving mindset. A byproduct of Mumbai and living as an extension of it in every place he exists, Yashraj affirms that great taste isn't bought, is cultivated. I like it. Written by Yashraj, produced by Akash Ravan, performed by Yashraj and Akash Ravan, mixed and mastered by Akash Ravan. Like I said, we are all living in the Akash Ravan era. Varun Kanakia is and Yashraj Mehra director. Okay, very nice. Lyrics bhi hai. Damn, son. 2 extra points. Chalo, let's get to Pyas. 1, 2, 3, play. सर नीचे रख के काम करो बोलो सर 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 नीचे रख के काम करो बोलो सर 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 नीचे रख के काम करो बोलो सर सर हम आँख में आँख डाल के बोलने लगे तो डर ऐसी प्यास लगी थी पूछा नहीं पानी तक मिलेगा भीख में सब ना कभी मिलेगा वक्त दादी दादा नानी गुजरे 3 साल में जब लगातार सब कुछ खोया हाथ जोड़े लेगी श्रद्धा ग्रैमी तक ऊपर से फिल्म फेयर नॉमिनेटेड होटल अकोमोडेटेड चीयरलीडर प्रॉम डेटेड बॉम्बे में बोर्न एंड रेज्ड और घंटा नहीं कंपटीशन एक्कलेड्स नहीं माता फ्लेक्स ये तेरे लिए एडमिरेशन अगर तेरा लेबल हेड एक रैपर अपना विजन सेम नहीं वैल्यू है शौक का ना शौक वैल्यू अपना गेम भाई वो जिनसे जज हो रहे थे उनके साथ जब गाने आए लेगेसी बनाने सर पे चढ़ा नहीं कब फेम दो शब्द यशराज नाम नहीं बचता रैप व्यवसाय में विजन की व्यवस्था है किसके चिराग जब जिन नहीं निकलता तू खिस ले ये गांड ताकि गिन सके तनख्वाह सात टापू एक शहर नाम उसका बम्बई 7 नापू 10 शहर टूर करूं जब कोई ना करना कंपेयर जूते हैं बड़े मेरे पड़ गए तेरे कंपेयर आई रियली मेक इट अनफेयर मैं जब से साला पत्थर बन गया स्टूडियो बन गया मंदिर रैप से बनाया घर सिर्फ पैसों के नहीं बंडल अगला माँ बाप का मकान बनेगा और बाहर लगेगा कंदिल के बेटे ने नाम किया रोशन रहूंगा शांत until you fuck with me again ADHD बैक बेंचर ले चबा गया तेरा पेन जब आता मेरा नाम क्यों उजड़ गया तेरा चैन लड़के जी रहा हूँ तेरा फैम I can drop when I can बड़ा humble like it's दिल से काम किया खिल से लोग झुंड बना के आ जाओ घर के पास ही एंड ऑफ हिल है दोस्त रिस्पेक्ट टू द वेट सबके साथ जाता बैक टू बैक खुद के बीट्स पे किया रैप चेंज कर दिया आफ्टरमैथ ये विजन लॉन्ग टर्म है लेगेसी सिंगल मॉल्ट नो हेनेसी खून खौलता पहले से चंदर टांग सी फैलेगी चाहे दाग हो चेहरे पे वो जान के सैलेगी अगर चला मेरे साथ गॉट नो टाइम फॉर जेलसी ब्रा दो शब्द यशराज नाम नहीं
नहीं बचता रैप व्यवसाय में विजन की व्यवस्था घिस के चिराग जबी जिन नहीं निकलता तू घिस ले ये गांड ताकि गिन सके तनख्वाह 7 टापू एक शहर नाम उसका बम्बई 7 नापू 10 शहर टूर करूं जब कोई ना करना कंपेयर जूते हैं बड़े मेरे पड़ गए तेरे कंपेयर आई रियली मेक इट अनफेयर स्टेट बोर्ड के लड़कों के पास लग्जरी टेस्ट बड्स फीचर्स के पहले भी हम घुसते मौकों में फेस फर्स्ट सिर्फ थोड़ी सी तरक्की से नहीं बदलती मेरी पेशकश मुझे बदलने सिर्फ हालात नहीं बदलनी सोच ये पेचकस एक माइक और एक पेज बस और जिंदगी में कम उदासी वरना बेल पे निकले लोग जिनको चढ़नी चाहिए थी फांसी और बढ़ती है आबादी में जब कलाकारी से पेट भरा वरना इनको कैसे समझाऊं कि मेरी भूखी है प्यासी बात समझ Sum up. Damn, boy. That was good. Oh, that was more than good. There was this whole section there which had, one second. That whole, it felt like it's going from chapter to chapter to chapter to chapter, and the music is changing according to his, what's the word? According to his tone. Very like, yeah, very old school, like it says in the description, but very, I don't know, there was something, it kept me so engrossed because of not just what he was saying, but how the music was keeping me connected to it, like I'm turning the pages of a storybook, every 2 lines or 3 lines, it felt like a page was turning, and I couldn't stop reading. Like it felt like that. I don't know if I'm describing it correctly or not, but there was this one section which was, I can't find it, except the and the ting, ting, the strings. हाँ, वो स्टेट बोर्ड के लड़के वाला सेक्शन. There's something echoed and it just, those old Hindi films में जो वो विलन की एंट्री जब होती थी और वो पीछे से चल रहा है, it's like a xylophone sound. Anyway, that is happening. Anyway, I don't know all the layers in this, but there must be like hundreds of layers in this, which is expected from an Akash Ravan, but the mixing is so crisp and so this thing. Yeah, I can't say any more except that it just felt like एक कहानी चल रही है और हम हर 2 लाइन बाद या 4 लाइन बाद आपका पेज टर्न हो रहा है, sonically पेज टर्न किया जा रहा है, and it just keeps you hooked. So lovely, very nice. Let's read the lyrics. Yash Raj now has a lot to brag about. I mean, Grammy tak pahunch gaye bhai sahab, everyone keeps talking about Grammys, Grammy लाएंगे ये वो और भाई साहब पहुंच भी गए, किसी को पता भी नहीं लगा. It's that latest French cut, you see, La Coupe Frosted Air. If you know, you know. Okay, no, but the stash, by the way, is looking really good. Youngie and I talked about it on our podcast. Oh, Yash Raj, तेरी mustache कितनी अच्छी है. Anyway, go watch it if you haven't. Real Talk, episode 18 with Youngstar. What was I saying? Yeah, we'll read the lyrics, but yeah, there's a lot for him to talk about. Also, not to take anything away, but like, especially the category that he was in, nothing to take away from that. But have you seen the pop categories of the Grammys in the last, I don't know how many years? It's just like even people in the US don't take the Grammys seriously anymore. So I think like Indian artists, all of us should just stop thinking that that's the pinnacle and the apex. It's not. We just gotta, yeah. Anyway, lyrics. Sar niche rakhe, kaam karo, bolo sir, sir. That bit was suddenly, with that 3 times repetition, you are hitting your target audience right there. You're like, this is for you, man. Listen. हम आंख में आंख डाल के बोलने लगे तो डर का वो डिस्टॉर्शन जो हुआ विजुअली एंड सोनिकली वाज सो गुड. ऐसी प्यास लगी थी पूछा नहीं पानी तक, मिलेगा भीख में सब ना कभी मिलेगा वक्त. आई लव इट. दादी दादा नानी गुजरे 3 साल में, जब लगातार सब कुछ खोया हाथ जोड़े ले गई श्रद्धा ग्रैमी तक. आई लाइक इट. ऊपर से फिल्म फेयर नॉमिनेटेड. दैट आई डिडंट नो. व्हाट वाज ही नॉमिनेटेड फॉर?
Hotel accommodated, cheerleader prom dated. Bombay. ये cheerleader and prom and all यहाँ होता है इंडिया में? Yeah, it's a Archie's concept. I don't know. I don't know what high schools are like in India. बॉम्बे में born and raised और घंटा नहीं competition, accolades नहीं मानता flex, ये तेरे लिए admirations. Nice. अगर तेरा label head एक rapper, अपना vision same नहीं. Who is he talking about here? एक rapper है label head, अपना vision same नहीं. Interesting. Value है शौक का, ना शौक value अपना game भाई. Nice. वो जिनसे जज हो रहे थे उनके साथ जब गाने आए, लेगेसी बनाने सर पे चढ़ा नहीं कभी फेम भाई. I like it. Don't listen to music with calculators in your hands. That's what Yashraj said on the drill, if you guys remember. If you don't, go watch. दो शब्द यशराज, नाम नहीं पचता, रैप व्यवसाय में विजन की व्यवस्था. वाओ. इसके चिराग जब ही जिन नहीं निकलता. जीनी तू घिसले ये ताकि गिन सके तनख्वाह. सात. This his whole like hook was long, but it was this. सात टापू एक शहर, नाम उसका बम्बई, सात नापू 10 शहर, टूर करूं जब कोई ना करना कंपेयर, जूते हैं बड़े मेरे पड़ गए तेरे कंपेयर. कंपेयर आई रियली मेक इट अनफेयर. नाइस. मैं जब से साला पत्थर बन गया, स्टूडियो बन गया मंदिर, रैप से बनाया घर, सिर्फ पैसों के नहीं बंडू. अगला माँ बाप का मकान बनेगा और बाहर लगेगी कंदिल, के बेटे ने नाम किया रोशन, रहूंगा शांत अंटिल. Me again, ADHD backbencher, ले चबा गया तेरा पेन, जब आता मेरा. Has he beefed with anyone? I don't think he has. ले चबा गया था जब आता मेरा नाम, क्या उजड़ गया तेरा चैन, लड़का लड़के जी रहा तू तेरा वहम, I can drop when I can, बड़ा humble like it's damn. That's a nod to Bella ना. Humble भी है, damn भी है. दिल से काम किया किल से लोग, झुंड बना के आ जाओ घर के पास ही एंट ऑफ हिल है दोस्त. ओह, is this a thing? Respect to the vets, सबके साथ जाता back to back. खुद के बीट्स पे किया रैप, चेंज कर दिया आफ्टरमैथ. नाइस. ये विजन लॉन्ग टर्म है, लेगेसी. ओके, ही सेड दैट अगेन. सिंगल मॉल्ट नो हेनेसी, खून खौलता पहले से ही, चद्दर चद्दर टांग सी फैलेगी, चाहे दाग हो चेहरे पे ही वो, जाके जाके व्हाट, अगर चला मेरा साथ, गॉट नो टाइम फॉर जेलसी. चाहे दाग हो चेहरे पे. व्हाट इज दैट? दो शब्द यशराज, नाम नहीं पचता, रैप व्यवसाय में विजन की व्यवस्था. ओके, आई रियली मेक इट अनस्पेयर. देन दिस सेक्शन, म्यूजिक हियर. स्टेट बोर्ड के लड़कों के पास लग्जरी टेस्ट बड्स. फीचर्स के पैसी. A lot of these things would have gone over my head. I wouldn't have understood what do you mean by state board, and what does this line even mean. Today I know some things. फीचर्स के पहले भी हम घुसते मौकों में फेस फर्स्ट. सिर्फ थोड़ी सी तरक्की से नहीं बदलती मेरी पेशकश, मुझे बदलने सिर्फ हालात नहीं, बदलनी सोच ये पेचकस. एक माइक और एक पेज बस. नाइस. और जिंदगी में कम उदासी, वरना बेल पे निकले लोग जिनको चढ़नी चाहिए थी फांसी. यस, अभी 3 लोग रिलीज हुए ना. वेरी सैड. और बढ़ती ये आबादी में जब कलाकारी से पेट भरा भरा, वरना इनको कैसे समझाऊं कि मेरी भूख ही है प्यासी. बात समझ. ओहो, बात समझ भाई. I like it. Yashraj is a prime example of, if you just keep your head in the game, have your blinkers on, just focus on what you're here for, and not lose track of that, then nothing can stop you. Oh, someone has left a comment here. Voice note 1 is Seek, then Moke, then Udan, then Gati, and now this is Pyas. Bhai, I don't know these first 4. Nobody has shared them with me. Can someone please to tell me where I can find them? Oh, Grammy nominated. That just came out of nowhere. That was so good. VN4 and VN5 will have a special place in my heart, says Gaurish. Like, somebody give me the links of these voice notes. It's not just a song, it's a progress report. I'm just seeing some of these.
Bada humble like it's damn. Is it not to Bella or is it something else? I'm just trying to see. Um, and yeah, sorry, I got distracted. But yeah, as I was saying, Yashraj is the prime example of, and if you haven't seen the drill, my thing feature where I featured him on the drill, it's on my Instagram. I think it's pinned on the top on my profile. Go watch that. I actually have a lot of unseen footage from that drill recording session. And I have to say that that was one of my favoriteest recording sessions of the drill. Um, he was just so like quick, and fun with his answers. I should release Henna all the unreleased stuff from that. But Yashraj, mad props, love this. Akash Ravan and you make a damn good artist producer duo. You've had stuff together in the past, and I don't know why it took so long to come back together. But glad it happened. Akash, as always, mad props to you. And um, I think I'll just do this here only. Like, why the hell did our podcast not happen last year, Yashraj? How many times did we try to make it happen? And then I left Bombay, so it didn't happen, but not cool, man. Let's make it happen at some point. Chalo, on that note, love this. If you guys have the VN1234K links, please leave them below and let me know what was your favorite bar in this one. Really nicely conceptualized and enacted and directed and edited video. Loved it. The stash is looking really good, suits you. So yeah, that's it. That's all I'm gonna say right now. Let me know where the other voice notes are, and I'll see you in the next one. Take care of yourselves, live long and prosper. दिल से काम किया खिल से लोग झुंड बना के आ जाओ घर के पास ही एंड ऑफ हिल है दोस्त रिस्पेक्ट टू द वेट्स सबके साथ जाता बैक टू बैक खुद के बीट्स पे किया रैप चेंज कर दिया आफ्टर मैथ ये विजन लॉन्ग टर्म है लेगेसी सिंगल मॉल्ट नो हेनेसी खून खोल